बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 21.2 and ORDS 21.4 with database 18c pluggable in Windows 10 इंशाअल्लाह quickly। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 21.2 और ORDS 21.4 को database 18c pluggable के साथ Windows 10 में इंस्टॉल किया जाता है जल्दी से। So first we will create a folder in C drive with the name 18c_21.2। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 18c_21.2 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर मजीद दो फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम के। And under this folder we further create two folder with the name DB and ORDS respectively। Extract database 18c in DB folder which we have just created। extract करेंगे Oracle database 18c को DB के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। Extract ORDS 21.4 in ORDS folder which we have just created, so we do not need to copy and paste ORDS folder। अब हम ORDS 21.4 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। The downloadable link of ORDS 21.4 is available. However, we have already downloaded ORDS 21.4 का downloadable link जो है वो मौजूद है, अलबत्ता हमने उसको पहले ही डाउनलोड कर लिया है। Extract Apex 21.2 in 18c_21.2 folder, so we do not need to copy and paste Apex folder। अब हम Apex 21.2 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे 18c_21.2 के फोल्डर के अंदर, तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। The Java version which we are using is Java 8 update 211। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 update 211 है। Run database setup with administrator rights। database का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स है। ऑप्शन विल बी क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर ए सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस। हिट नेक्स्ट बटन। ऑप्शन जो है क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर ए सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस का रहेगा। नेक्स्ट का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी डेस्कटॉप क्लास। हिट नेक्स्ट बटन। ऑप्शन डेस्कटॉप क्लास रहेगा। नेक्स्ट का बटन दबाएं। Option will be use Windows built-in account। You can use other option as well। hit next button। use Windows built-in account का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट का बटन दबाएं। yes। now assign global database name, password, confirm password and pluggable database name from your choice। hit next button।
ग्लोबल डेटाबेस का नाम देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड देंगे और प्लगेबल डेटाबेस का नाम देंगे अपनी मर्जी से और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। यस, नाउ वी विल हिट इंस्टॉल बटन। अब हम इंस्टॉल का बटन दबाएंगे। Oracle Database 18C has installed at close button। Oracle Database 18C जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज का बटन दबा दे। ओपन कमांड prompt and reach where apex folder is available। कमांड prompt खोलेंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ apex का फोल्डर मौजूद है और वहाँ जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे। When we reach there, run this command। कनेक्ट विद sysdba, कनेक्ट होंगे sysdba से and check SGA maximum size by running show parameter SGA command। If it is less than 3000 MB then we have to increase it। अब हम SGA maximum size पता करेंगे show parameter SGA की कमांड चला के। अगर वो 3000 MB से कम होगी, SGA maximum size कम होगा तो हम उसको बढ़ाएंगे। So it is less than 3000 MB। तो ये now तो ये 3000 MB से कम है, हम इसको बढ़ा रहे हैं। It is less than 3000 MB। Now we are increasing it। Now we will check a pluggable database status whether it is in read write mode or not। अब हम pluggable database का status चेक कर रहे हैं कि वो read write mode में है या नहीं है। If it is in read write mode then we will save its state। ये read write mode में है तो अब हम इसकी state को महफूज कर देंगे। Now we will shut down database by running shut immediate command। अब हम database को बंद करेंगे shut immediate की command चला के। The advantage of saving state is that when we shut down database and start it again, so it will remain in read write mode। Pluggable database की state को महफूज करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम database को बंद करते हैं और उसको दोबारा start करते हैं तो दोबारा चलाते हैं तो उसकी स्टेट जो है वो महफूज रहती है। Now we will start database while running startup command। अब हम database को start करेंगे startup की command चला के। We shut down database and start it again so we can see the reflection we did in SGA maximum size। हम डेटाबेस को बंद करते हैं और उसको दोबारा चलाते हैं इसलिए ताकि जो तब्दीली हमने की है SGA मैक्सिमम साइज में वो हो जाए और हम उसको देख सकें। We shut down database and start it again because we want to see the reflection we did in SGA maximum size। Now we will check SGA maximum size again to make sure that the changes we did as reflected। अब हम SGA maximum size पता कर रहे हैं ताकि ये तसल्ली कर लें कि जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है। तो जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है। The changes we did as reflected। Now we will install apex by running this command। अब हम apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के। सॉरी,
Now we will run this command, and we run this command before every Apex script to make sure whether we connect with Pluggable Database or not. If we connect with a Pluggable Database, then we can run Apex script. If not, then we have to connect with Pluggable Database first and then run Apex script. ORDS की कमांड हम तमाम एपेक्स के स्क्रिप्ट्स को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि तसल्ली कर लें कि हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं तो हम एपेक्स का स्क्रिप्ट चला देंगे। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होंगे और फिर एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे। और जब हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हों तो ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑथर और जब हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हो तो ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर्ड लिखा हुआ आ गया। अगर सेशन ऑल्टर्ड लिखा हुआ नहीं आया तो हमें दोबारा सिस के यूजर से कनेक्ट होना पड़ेगा। While connecting with a pluggable database, we make sure that session altered appear. If not, then while connecting with a pluggable database, we make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with sys user again. Now we can install Apex by running this command. अब हम Apex को install कर सकते हैं ये command चला के। Oracle Apex 21.2 has installed. Oracle Apex 21.2 जो है वो install हो चुका है। Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे यूजर विल बी एडमिन प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड फ्रॉम योर चॉइस। यूजर जो है वो एडमिन रहेगा। ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दें। नाउ वी विल रन दिस कमांड। अब हम ये कमांड चलाएंगे। Now we will run this command and provide password for Apex listener and Apex trace public user, which will be Oracle in lowercase. अब हम ये कमांड चलाएंगे, पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex trace public user को, जो कि Oracle रहेगा छोटे और फॉर्म में। Exit this command prompt. इस कमांड prompt को बंद कर दें। Open new command prompt with administrator rights. नया कमांड prompt खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद है and reach where ORDS folder is available and when we reach there run this command. जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे। Now we will provide a configuration path where we want to configure ORDS. अब हम configuration का पता देंगे जहाँ पे हम ORDS को configure करना चाहते हैं। Enter. If your port is 1521, then hit enter button. If your port is different, then define your port and hit enter button. अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें। अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं। To find your port, navigate to Oracle Aura DB18 Home 1. Expand it. अपनी पोर्ट पता करने के लिए Oracle Aura DB18 Home 1 में इसको खोलें। Come to Net Manager, open it. उसको खोल लें। Option will be 2 because we install pluggable database. Option जो है वो 2 रहेगा क्योंकि हमने pluggable database install किया है। Sorry, option will be 1 because we have installed a pluggable database. Option जो है वो 1 रहेगा क्योंकि हमने pluggable database install किया है।
Provide password and confirm password for ORDS public user, which will be Oracle in lowercase. पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे ORDS पब्लिक यूजर को, जो कि Oracle लाएगा छोटे हरफों में. Administrator username, enter. Administrator username will be sys. Provide password and confirm password from our choice. Administrator username जो है वो sys आएगा, पासवर्ड और confirm पासवर्ड दे देंगे हम इसको. Enter, 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 enter. Provide password and confirm password for Apex public user, which will be Oracle in lowercase. Password और confirm password देंगे Apex public user को, जो कि Oracle रहेगा छोटे हरफों में. Enter. Provide password and confirm password for Apex listener and Apex rest public user, which will be Oracle in lowercase. Password और confirm password देंगे Apex listener और Apex rest public user को, जो कि Oracle रहेगा छोटे हरफों में. Now copy images folder from the Apex installation folder. अब हम कॉपी करेंगे images के फोल्डर को Apex के installation folder में से. And paste it to this path, और उसको इस पते पे चस्पा करेंगे. Enter. Now provide a path to Apex static resource location till images folder. हम Apex static resource location को पता देंगे images के folder तक का. Enter. If you want to change the port, you can. If you do not want, then leave it as it is. आप अगर port change करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही रहने दें. When Oracle REST data services initialize a pair, we can access Oracle Apex 21.2. However, do not close this command prompt, because if it closes for any reason, we cannot access Oracle Apex 21.2. Moreover, we can reopen it as well. जब Oracle REST Data Services Initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 21.2 को इस्तेमाल कर सकते हैं. अलबत्ता हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको बंद कर दिया तो हम Oracle Apex 21.2 को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. लेकिन हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा खोल सकते हैं. ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से, वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर मौजूद है. एंड रीच वेयर ORDS फोल्डर इज अवेलेबल, एंड व्हेन वी रीच देयर रन दिस कमांड. जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे. Oracle Apex 21.2 and ORDS 21.4 with database 18C Pluggable as installed in Windows 10. Oracle Apex 21.2 और ORDS 21.4 database 18C Pluggable के साथ Windows 10 में इंस्टॉल हो चुका है. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.